Alright guys, welcome back to the channel and welcome to the sound testing of this Pioneer 308 Duo जो Enclosure अभी हमने लास्ट वीडियो में रेडी किया है। बड़ी मुश्किल से ही पुंटो के अंदर मैंने इसको फिट जरूर कर दिया एंड ये आप देख रहे हो बहुत ही औसम तरीके से फिट हो गया है। एंड करेंटली आई एम यूजिंग अ पंक ऑडियो एम्पलीफायर, सो वो इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है बट अभी करेंटली उसे 2 ओम पे डाल दिया है। आई होप कि 2 ओम पे स्टेबल रहे। एम्प उड़ गया ना, बड़ा दुख होगा मुझे क्योंकि ये ड्यूल वॉइस कॉइल के सबवूफर्स हैं जैसा कि आप लोगों को पता ही है। करेंटली आई एम यूजिंग एक कॉइल दोनों की 1 कॉइल ईच, सो ये 2 ओम पे है पैरेलल वायरिंग के साथ। सो चला के देखा जाए। It is time to change the position of this bad boy, you guys. So अभी सारी जो की टेस्टिंग हुई है वो इसकी आउटवर्ड फेसिंग साइड से हुई है। अब इसको टॉप साइड पे फेस करना है। सो इतना बड़ा ये इंक्लूजर है, जबकि पुंटो का बूट गाइस इतना छोटा नहीं है। इट्स 280 लीटर्स। उसके बाद भी इसको मूव करना वाज अ टास्क। सो इसको किसी तरीके से सीटें वापस फोल्ड करी एंड देन हमने इसको बड़ी मुश्किल से हिला डुला के टॉप फेसिंग पे डाल दिया एंड उसके बाद वापस से सीट्स बंद की। एंड इस बारी गाइस मैंने इसमें पार्सल शेल्फ नहीं लगाया। पार्सल शेल्फ पहले लगा हुआ था बट अब नहीं लगाया क्योंकि मुझे चेक आउट करना था थोड़ी सी इसकी ऑडियो को। तो आप भी सुनो गाइस एंड मुझे बताना कि आपको कौन सी वाली पोजीशन ज्यादा अच्छी लगी। Alright guys, so that's it for the testing of these Pioneer 308 in the LMD ported enclosure. आप guys मुझे बताना लोग कैसा लगा है ये। एंड अभी इस सीरीज के अंदर कुछ और वीडियोस भी हैं जैसे कि रैप एंड उसके बाद होएगी गाइस इसकी डिलीवरी एंड ऑब्वियसली बात है क्लाइंट की कार में इंस्टॉलेशन साथ ही होगा ऑब्वियसली बात है डिलीवरी के। सो मिलते हैं गाइस अब नेक्स्ट वीडियो में। आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो ऑफ दिस सबवूफर एंक्लोजर एंड कुछ भी गाइस क्वेश्चन क्वेरी आप लोगों की होगी तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड गाइस मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय, टेक केयर, सी यू गाइस, हैव लॉट्स ऑफ फन, टेक केयर।